So hello everyone. At this class I am going to start the coordinate system. Okay, coordinate system. It is the basic part of geometry only. In the last class I have discussed about the locus. So today I am going to discuss about coordinate system. तो coordinate system जब आ जाता है तब इसमें 2 dimensional geometry, 3 dimensional geometry सब कुछ include होता है. But I will explain today 2 dimensional geometry. Okay, under coordinate system you have to study about 2 dimensional geometry. थोड़ा बहुत idea सबको है about the Cartesian plane, or you can say XY plane. There are 4 quadrants. In first quadrant all both x and y are positive. In second quadrant x negative, y positive. In third quadrant both x and y are negative, whereas in fourth quadrant x positive, y negative. तो इतना सा basic idea सबको है. Apart from the Cartesian plane, all of you know about the distance formula also. That is the distance between the 2 points. Yes? तो वो सब छोड़ के बाकी जो जरूरत है, जो नया टॉपिक्स है, वो सब मैं अभी डिस्कस करूंगा. ठीक है? जैसे कि द फर्स्ट पॉइंट, टुडेज फर्स्ट पार्ट इज कोलिनियरिटी. आई थिंक ये भी सबको मिल गया होगा. कोलिनियर मीन्स व्हाट. फिर भी मैं यहां से शुरू करता हूं. ठीक है? सो कोलिनियरिटी मीन्स व्हाट. 2 or more points are said to be collinear. 2 or more points are said to be collinear if they lie in a line. अगर 2 या 2 से ज्यादा पॉइंट्स एक ही लाइन में रहेगा तो we can say that the points are collinear. Yes? तो कोलिनियर का तो डेफिनेशन ये है, लेकिन न्यूमेरिकल जब सॉल्व करना है तब क्या फॉर्मूला यूज करना पड़ता है. कोलिनियर, शो दैट द पॉइंट्स आर कोलिनियर. तब हम लोग कैसे प्रूव करेंगे. ठीक है? सो यहां पे फॉर्मूला लिखा गया है. इफ ए बी एंड सी आर कोलिनियर, सपोज द 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर ए बी एंड सी, देन ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी. यू कैन राइट टू प्रूव ए बी सी आर कोलिनियर. You can write AB plus BC equal to AC, or AC plus CB equal to AB, or BA plus AC is equal to BC. Okay, so among these 3 conditions you can apply any one to prove the 3 points are collinear. Okay, we all know that the definition of collinearity means if the 3 or more than 3 points lie on the same line, then the points are said to be collinear. And to prove the collinearity, you can apply these 3 conditions. तीनों में से कोई एक कंडीशन यूज करने से होगा. Now the question is, what is AB, what is BC, and what is AC? AB means what? It is the distance between A and B. Distance between the 2 points A and B. You know distance formula. बस वही distance formula यूज करना है AB में. In the same way, you have to apply the distance formula in the second part also, that is the distance between B and C, distance between A and C. बस वही distance formula use करके ही proof कर सकते हैं कि whether the points are collinear or not. Okay, so this is all about collinearity. The next will come section formula. Section formula. हालांकि ये section formula भी किसी किसी को मिल चुका होगा. ये सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है. 2 टाइप का होता है फॉर्मूला. देयर आर 2 फॉर्मूलाज, राइट. द फर्स्ट वन इज, लेट मी ड्रॉ द डायग्राम फर्स्ट. दिस इज अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स A and B, and in between A and B say there is another point P. Okay, in between A and B say there is another point P. Let the coordinates of A be x1, y1, coordinates of B x2, y2, coordinates of P से x, y. Okay, ये एक स्ट्रेट लाइन है. AB के बीच में मैं P लगा दिया. P is any point on the line AB. Now listen carefully. If the point P divides the line segment joining AB in the ratio M is to N, in the ratio M is to N, then the coordinates of P
coordinates of P can be written as, look at here, mx2 m into x2 plus n into x1, m into x2 plus n into x1 divided by m plus n, comma m into y2 plus n into y1, m into y2 plus n into y1 divided by m plus n. Coordinates of P means x comma y. Yes, we have considered the coordinates of P x comma y. Okay, so this is the section formula, and this section formula is called internally section formula. इंटरनली सेक्शन फॉर्मूला. कैसे पता चलेगा कि ये सेक्शन फॉर्मूला इंटरनली है या फिर एक्सटर्नली है? अगर इफ द पॉइंट, लिसन, इफ द पॉइंट P लाइज बिटवीन A एंड B, अगर A और B के बीच में होगा तो पॉइंट P, देन इट इज कॉल्ड इंटरनली सेक्शन फॉर्मूला. ठीक है, इंटरनली सेक्शन फॉर्मूला, एंड दिस इज द फॉर्मूला, राइट? Coordinates of P, that is x comma y, is equal to mx2 plus nx1 by m plus n, comma my2 plus ny1 by m plus n. Okay, so internally section formula ये है. और internally होगा बोल के कैसे पता चलेगा? When the point P lies between A and B, right? Next, externally section formula. There are two types of section formula. पहले ही मैं बता दिया था. तो externally section formula क्या होता है? Look at here, A and this is point B, right? ये AB को मैं थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया, ये एक्सटेंड कर दिया तो यहां पे है पॉइंट P, राइट? सपोज द पॉइंट P, दिस पॉइंट P divides AB again in the ratio m:n, but it is externally, okay? Let the coordinates of A x1 y1, same only coordinates of B x2 comma y2, and the coordinates of P say x comma y. Look at the difference between these two diagrams. In this case P lies between A and B, and here the point P lies on the extended line segment of A and B. Yes or not? Here the point P lies on the extended line segment between A and B. जो A और B को एक्सटेंड करने के बाद ही वो पॉइंट P को लिखा गया है. इसका मतलब है कि जब पॉइंट P बाहर से A और B को डिवाइड करेगा इन द रेशियो m:n, then it is called externally section formula. Okay, then it is called externally section formula. So the formula is x comma y is equal to, this is the coordinates of P, which is equal to mx2 minus nx1 divided by m minus n, comma my2 minus ny1 divided by m minus n. यहाँ पे जो लिखा गया है ना, देख सकते हो, ये है x कोऑर्डिनेट, ये है y कोऑर्डिनेट, इसीलिए कंपेयर करना है ना. ओके, सो एक्सटर्नली सेक्शन फॉर्मूला में हमेशा माइनस साइन दे के रिप्रेजेंट करना पड़ता है. ठीक है, एक्सटर्नली सेक्शन फॉर्मूला में हमेशा माइनस साइन दे के ही रिप्रेजेंट करना पड़ता है. सो दिस इज एक्सटर्नली सेक्शन फॉर्मूला एंड दिस इज इंटरनली. अगर इंटरनली याद रहेगा तो एक्सटर्नली याद रखने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि इंटरनली में प्लस साइन होता है बोथ इन द न्यूमरेटर एज वेल एज इन द डिनोमिनेटर, वेयर एज इन केस ऑफ एक्सटर्नली सेक्शन फॉर्मूला माइनस साइन यूज हो जाता है. ठीक है, सो ये हो गया फॉर्मूला के बाद. लेकिन जब इंटरनली पॉइंट P डिवाइड करता है AB को, if the point P divides AB internally, then it is in the form of AP is to PB. Okay, AP is to PB. याद रखना. In case of internally section formula, we used to take the ratio as AP is to PB. AP is to PB because P बीच में होता है ना A और B का, इसीलिए AP is to PB लेना पड़ता है. Okay, but in case of externally section formula, we used to take the ratio as minus AP is to PB or AP is to minus PB. याद रखना. हाँ, एक्सटर्नली सेक्शन फॉर्मूला में नेगेटिव रेशियो होता है. इसी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वेदर द पॉइंट डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट एक्सटर्नली और इंटरनली. हाउ कैन वी आइडेंटिफाई? इफ द रेशियो
is positive, then we can say that it divides internally. But if the ratio is negative, like say -2:3 or 3:-2, अगर negative होगा तो ratio, which means we can say that the given point divides the line segment externally, right? So in case of internally, we used to take the ratio AP:PB, whereas in case of externally, we used to take the ratio as -AP:PB और AP:-PB. नेगेटिव हो जाता है रेशियोज, ठीक है? सो ये फॉर्मूला और ये है रेशियोज का कंडीशंस. तो यही है सेक्शन फॉर्मूला का कंडीशंस एंड डेफिनेशंस, राइट? ओके, नेक्स्ट विल कम मिड पॉइंट फॉर्मूला. ये सब नोट डाउन करना पड़ेगा. नेक्स्ट विल कम मिड पॉइंट फॉर्मूला. तो मिड पॉइंट फॉर्मूला भी सबको मिल गया होगा, फिर भी मैं और एक बार दे देता हूं. मिड पॉइंट फॉर्मूला का मतलब है कि सपोज देयर इज अ लाइन सेगमेंट AB and say M is the midpoint between A and B. Let the coordinates of A and B be x1 y1, x2 y2 and the coordinates of M say x, y. देखो यहां पे जो M है वो डिवाइड नहीं किया AB को, मतलब इन द फॉर्म ऑफ लाइक M:n नहीं, इक्वली डिवाइड किया गया है यहां पे, ठीक है? इसलिए तो मिड पॉइंट बोला गया है. Here M is the midpoint. This is second formula, third formula, okay, which is midpoint formula. Midpoint formula, section formula नहीं है ये, midpoint formula. So here M is the midpoint, right? M is the midpoint between A and B. So if M is the midpoint between A and B, then the coordinates of M, this is equal to, coordinates of M is equal to x1 plus x2 by 2, y1 plus y2 by 2. ये है मिड पॉइंट फॉर्मूला. वेरी सिंपल. मिड पॉइंट फॉर्मूला का मतलब है ये पूरा बीच में है. इट डिवाइड्स AB इन द रेशियो 1:1. सो द मिड पॉइंट फॉर्मूला इज x1 plus x2 by 2, y1 plus y2 by 2. Coordinates of M. Coordinates of M means you can write x, y is equal to x1 plus x2 by 2, y1 plus y2 by 2. So this is all about midpoint formula. Next part, next will come trisection formula. Trisection formula. हेडिंग से ही पता चलता है कि डायग्राम कैसा हो सकता है. ट्राइसेक्शन फॉर्मूला. दिस इज AB. ओके, इट्स अ लाइन सेगमेंट joining the points A and B. Let P and Q divides AB. देखो जब P AB को डिवाइड करेगा, इट डिवाइड्स AB इन द रेशियो 1:2. देखने से ही पता चलता है क्योंकि P A का नजदीक में है लेकिन B से थोड़ा सा दूर है, इसलिए 1:2 फॉर्म में डिवाइड किया जाता है. Whereas Q divides AB in the ratio 2:1. Why? Because अभी Q है B का नजदीक में और A से थोड़ा सा दूर. Is it clear? This is called trisection. Trisection का मतलब 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है. The points P and Q divides AB in 3 parts. Yes or not? 1, 2, 3. 3 parts. That's why it is called trisection formula. ठीक है? लेकिन P कैसे डिवाइड करेगा? ये रेशियो फिक्स्ड है. You cannot change the ratio. P always divides AB in the ratio 1:2, whereas Q divides AB in the ratio 2:1. So, if the point P divides AB in the ratio 1:2, then what will be the section formula? Let us consider the coordinates of A, say x1, y1, and that of B, say x2, y2. Okay, so P और Q का कोऑर्डिनेट चलो ठीक है, इसका दूसरा कुछ ले लेंगे. So therefore coordinates of P, say coordinates of P C, D. So C, D is equal to, तो फिर क्या होगा? यहाँ पे तो रेशियो से डिवाइड किया गया है ना, means here you have to use the section formula. So section formula यूज करने से क्या होगा? mx2, m into x2, 2 into x2 plus m into x2, here m is 1, so
1 into x2 that is x2 plus 2 into x1 divided by 3 comma m into y2 1 into y2 that is y2 plus 2y1 divided by 1 plus 2 that is 3. So this is the ratio, means when P divides AB in the ratio 1:2. C and D are the coordinates of the point P. Similarly, if the point Q divides AB in the ratio 2:1, then see what will happen. तो Q का कोऑर्डिनेट मैं ले लेता हूं S, R. So this is equal to क्या होगा, तो फिर m into x2 that is now here 2 into x2 plus x1 divided by 3 plus comma 2 into y2 plus y1 divided by 3. So this is trisection formula. It's very simple. So if you know section formula, you can easily write down the trisection formula also. Okay, you can easily write down the trisection formula. सिर्फ यही याद रखना है कि P हमेशा AB को डिवाइड करता है इन द रेशियो 1:2, whereas Q divides AB in the ratio 2:1. Okay, so this is all about trisection formula. Now I am going to discuss the next part with few examples. So now whatever I will discuss, ये सब शॉर्टकट मेथड है जो ऑब्जेक्टिव में यूज हो सकता है. ठीक है, ऑब्जेक्टिव में यूज हो सकता है मतलब यूज होगा. दिस फॉर्मूला विल नॉट गेट इन योर एनसीईआरटी. जो मैं बेसिक जियोमेट्री का पार्ट पढ़ा रहा हूं, अभी एक्सप्लेन कर रहा हूं, वो सब एनसीईआरटी में नहीं है. लाइक लोकस, देन दिस वन से 2D जियोमेट्री, दिस थिंग्स आर नॉट देयर इन योर एनसीईआरटी. द बेसिक थिंग्स आर नॉट देयर. ठीक है, तो इसीलिए जो मैं फॉर्मूला या फिर डेफिनेशंस दे रहा हूं वो इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. जेई मेंस के लिए यूज हो सकता है शॉर्टकट फॉर्मूला. Okay, these are the shortcut formula. Look at the first formula. If P of x comma y lies in the line segment joining A and B, then P divides AB. In the ratio. Look at here. This is shortcut formula. x1 minus x is to x minus x2, or y1 minus y is to y minus y2. Okay, this is shortcut formula. If the point P lies in the line segment joining the points A and B, then P divides AB in the ratio x1 minus x is to x2 minus x2, or y1 minus y is to y minus y2. First formula. Second formula. X-axis divides the line joining A and B always in the ratio minus y1 is to y2. शॉर्टकट फॉर्मूला है, डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो न्यूमेरिकल में. ठीक है, मैं अप्लाई करके भी दिखाऊंगा जब न्यूमेरिकल डिस्कस करूंगा. ओके, सो एक्स एक्सिस डिवाइड्स द लाइन जॉइनिंग A and B in the ratio minus y1 is to y2. Third one, y axis divides the line joining A and B in the ratio minus x1 is to x2. Okay, fourth one is if x1 y1, x2 y2 and x3 y3 are the three vertices of a parallelogram. पैरालिलोग्राम के बारे में सबको आइडिया है, तो फिर यहाँ पे 4 वर्टेक्स होता है, 4 वर्टिसेस होता है, सबको पता है. So x1 y1, x2 y2, x3 y3 are the 3 vertices of a parallelogram. Then the fourth vertex is, see, look at here. How can we find the fourth vertex? This is shortcut formula. To find the fourth vertex of the parallelogram, we can use this formula. That is x1 minus x2 plus x3, comma y1 minus y2 plus y3. Okay, it's very simple. अगर सब मतलब लॉन्ग मेथड में सॉल्व करने जाओगे तो फोर्थ वर्टेक्स निकालने के लिए मिड पॉइंट का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, बहुत कुछ काम करना पड़ेगा. इतना टाइम कहाँ है. जब ऑब्जेक्टिव में अप्लाई करोगे तो अगर ये सब मिड पॉइंट फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला, ये फॉर्मूला, वो फॉर्मूला अगर यूज करने जाओगे तो टाइम बहुत वेस्ट होगा. सो दिस इज द शॉर्टकट फॉर्मूला. टू फाइंड द फोर्थ वर्टेक्स यू कैन यूज दिस फॉर्मूला. ओके, x1 minus x2 plus x3, comma y1 minus y2 plus y3. Okay, so these are the shortcut formula. Many formulas are there. ये मैं सिर्फ थोड़ा थोड़ा करके लिख रहा हूँ. 4 formulas I have written.
Next I will discuss the next formula. Okay. So take a look at the next point. It is very very important. That is a harmonic conjugate. Harmonic conjugate. क्या है ये harmonic conjugate? Look at here. If a point P divides the line joining AB in the ratio L is to M. If a point P divides AB in the ratio L is to M, then the point Q, the point Q divides AB in the ratio L is to minus M. The point Q divides AB in the ratio L is to minus M is called the harmonic conjugate of P with respect to A and B. So in this diagram, which one is the harmonic conjugate? Q is the harmonic conjugate of P. Okay, Q is the harmonic conjugate of P. तो अगर Q P का हार्मोनिक कॉन्जुगेट है तो सपोज P का कुछ कोऑर्डिनेट्स दिया गया है से x, y. अगर क्वेश्चन में पूछा गया है कि फाइंड द हार्मोनिक कॉन्जुगेट ऑफ P ऑफ दिस पॉइंट P, तो जो रिजल्ट फाइंड आउट होगा दैट विल बी इन टर्म्स ऑफ कोऑर्डिनेट ओनली. यस और नॉट? अगर P का कोऑर्डिनेट दिया जाएगा तो Q का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए क्या क्या जरूरत पड़ेगा? यू हैव टू नो द रेशियो. यस और नॉट? अगर एक क्वेश्चन में रेशियो नहीं दिया जाएगा तो हाउ कैन वी फाइंड द हार्मोनिक कॉन्जुगेट ऑफ Q, हार्मोनिक कॉन्जुगेट ऑफ P? ये बात याद रखना है हमेशा. ठीक है, तो यहाँ पे हार्मोनिक कॉन्जुगेट किसको बोला गया है? Q को. इफ द पॉइंट P डिवाइड्स AB इन द रेशियो L is to M, the ratio must be given in the question. If it is not given, then also you can find out the ratio. I will give you one example now. Okay, ये बात हमेशा याद रखना है. अगर रेशियो नहीं दिया जाएगा तो विदाउट रेशियो वी कैनॉट डिटरमाइन द हार्मोनिक कॉन्जुगेट. Okay, we cannot determine the harmonic conjugate if you don't know the value of L is to M. If you don't know the value of L is to M, then we cannot determine the harmonic conjugate. So to find the harmonic conjugate, always you have to remember that this ratio must be given in the question. But if it is not given, first step will be find the ratio. Then only we can find the harmonic conjugate. Okay. So here Q is called the harmonic conjugate. Okay. Then take one example now. अभी clear हो जाएगा. Take one example. Find the harmonic conjugate. I have written the short form. Harmonic conjugate of 7,5. Find the harmonic conjugate of 7,5 with respect to 4,2 and 9,7. With respect to 4,2 and 9,7. Look at the question. Definition में रब नहीं किया इसीलिए क्योंकि definition के हिसाब से and diagram के हिसाब से मैं अभी इसको solve करूंगा ताकि तुम लोगों को थोड़ा जल्दी समझ में आए. ठीक है, तो देखो you are asked to find the harmonic conjugate of 7,5. तो 7,5 किसका कोऑर्डिनेट है? पॉइंट P का कोऑर्डिनेट है कि नहीं? पॉइंट P का कोऑर्डिनेट 7,5 दिया गया है. ओके, you are asked to find the harmonic conjugate of this point. तो मतलब यहाँ पे P का हार्मोनिक कॉन्जुगेट क्या है? Q है. तो मतलब अगर P का कोऑर्डिनेट दिया गया है तो Q का भी जो रिजल्ट मिलेगा सॉल्व करने के बाद जो रिजल्ट मिलेगा वो भी कोऑर्डिनेट ही होना चाहिए, है ना? Q का भी रिजल्ट कोऑर्डिनेट में होना चाहिए. ओके, फाइंड द हार्मोनिक कॉन्जुगेट ऑफ 7,5 विथ रेस्पेक्ट टू 4,2 एंड 9,7. These 2 points are what? These 2 points are nothing but A and B. The coordinates of A and B are given. Okay, look at the diagram. The coordinates of A and B are given. Apart from the coordinates of A and B, coordinates of P are also given 7,5. Okay, you are asked to find the coordinates of Q. What is this Q? As per the definition, Q is the harmonic conjugate of the point P. Okay. Now the question is whether the ratio is given in this question. No, ratio is not given. तो मैं क्या बोला था? अगर रेशियो नहीं दिया होगा तो you have to find the ratio first of all. That means L is to M का वैल्यू पहले फाइंड आउट करना ही पड़ेगा. ठीक है, तो कैसे फाइंड आउट किया जाएगा? इसके पहले मैं तो एक फॉर्मूला दिया था, शॉर्टकट फॉर्मूला. If P of X, Y
if P of x comma y divides AB, then sorry, if P of x comma y lies in the line segment joining AB, then P divides AB in the ratio what? x1 minus x is to x minus x2 or y1 minus y is to y minus y2. यही दिया था फॉर्मूला. यस. सो ये बात याद रखना है, जब रेशियो हार्मोनिक कॉन्जुगेट का क्वेश्चन सॉल्व करने के टाइम में जब रेशियो नहीं दिया रहता है, you have to find the ratio by using this shortcut formula. Okay, so the point P lies in the line segment, so therefore P divides AB in the ratio x1 minus x is to x minus x2. So x1 क्या है यहाँ पे? What is x1? x1 is here 4. x1 is here 4. Okay, so you have to write like this, that the point P divides these two points. बेटर मैं इधर लिख देता हूं. Point P divides 4,2 and 9,7 in the ratio. What is the formula? x1 minus x. x1 is here 4. 4 minus x is here 7. 4 minus 7 is to 7 minus x2, x minus x2. So x2 is 9. So this is equal to 4 minus 7, that is minus 3 is to minus 2. So minus minus we can cancel it out. So it is 3 is to 2. Okay. So now we know the ratio. Do you know ये किसका रेशियो है? P का या Q का रेशियो? This is the ratio of P only ना, because P का कोऑर्डिनेट ही यूज किया मैं यहाँ पे. तो मतलब अभी मुझे L is to M पता चल गया. If you don't know the value of L is to M, then you cannot find the harmonic conjugate. Okay. So P divides AB in the ratio 3 is to 2. It is confirmed. Therefore, we can say that the point Q, from the diagram only I am saying, okay, the point Q divides AB. AB means this one, this is A, this one is B. Point Q divides AB in the ratio, बता सकते हो क्या होगा? In the ratio, as per the definition, L is to minus M. Yes, Q divides AB in the ratio L is to minus M. That is 3 is to minus 2. Okay, now we can say that Q divides AB in the ratio 3 is to minus 2. Therefore, the coordinates of Q, you have to find the coordinates of Q only, right? Because P का कोऑर्डिनेट दिया गया है, मतलब हार्मोनिक कॉन्जुगेट जो है Q, उसका भी तो कोऑर्डिनेट ही फाइंड आउट करने के लिए दिया ना. सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q क्या होगा? कौन सा फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा यहाँ पे? सेक्शन फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा कि नहीं? बिकॉज सेक्शन फॉर्मूला क्यों एप्लीकेबल होगा? बिकॉज यहाँ पे रेशियो दिया गया है, Q डिवाइड्स AB इन द रेशियो 3 is to minus 2. सो यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला यूज किया जाएगा अभी. ओके, तो सेक्शन फॉर्मूला तो सबको पता है. जनरली इंटरनली सेक्शन फॉर्मूला ही यूज होता है सब में. ठीक है, अगर एक्सटर्नली होगा तो इट विल बी मेंशन इन द क्वेश्चन. Okay, so 3 is to minus 2 is the ratio. So formula is what? M into x2. M is here 3. 3 into x2. x2 is 9. Okay, M into x2 minus n into अभी यहाँ पे माइनस q होगा, प्लस q नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी माइनस साइन है ना. सो प्लस माइनस बिकम माइनस. सो माइनस 2 into m into x2 plus n into x1. x1 is 4 divided by m plus n. लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी माइनस है, so this will be minus only 3 is to minus. Or else you can say that here Q divides AB externally also. क्योंकि एक्सटर्नली हुआ इसलिए तो रेशियो नेगेटिव हो गया. ठीक है, नॉर्मली हम लोग बता सकते हैं कि इंटरनली फॉर्मूला यूज होता है जब तक एक्सटर्नली का कंडीशन नहीं दिया रहता है. बट यहाँ पे जो पॉइंट Q ने AB को डिवाइड किया 3 is to minus 2 में, Q नेगेटिव हो गया. जब P डिवाइड किया था AB को तब 3 is to 2 था. अभी जब Q डिवाइड किया AB को तब 3 is to minus 2 हो गया. क्यों minus 2 हो गया? बिकॉज Q तो AB को बाहर से डिवाइड किया ना, मतलब एक्सटर्नली डिवाइड किया. तो एक्सटर्नली डिवाइड करेगा तो हमेशा रेशियो तो ऐसा ही होता है ना. ऑलरेडी मैं सेक्शन फॉर्मूला में बता दिया था. In case of external ratio, we used to take the ratio as minus AP is to PB or AP is to minus PB. So here also the same thing. Okay, since the point Q divides AB externally, that's why
That's why here we are using minus sign. Okay, comma m into y2, that is 3 into y2. Y2 is here 7 minus 2 into y1. Y1 is here 2 divided by 3 minus 2. Okay, now if you simplify this one, let's see what will happen. 27 minus 8. 27 minus 8, that is 19. 19 comma 21 minus 4, that is 17. 3 minus 2 is 1, so that's why no need to write. So these are the coordinates of Q. तो जो वैल्यू फाइंड आउट करना था वो है 19, 17. Okay, you are asked to find the harmonic conjugate of 7, 5. So 7, 5 is the coordinate of which point? Point P. With respect to 4, 2 and 9, 7. So these 4, 2 and 9, 7 are what? The coordinates of A and B. So harmonic conjugate of P क्या होता है as per the definition? The point Q only. The point Q which divides AB externally, that is called harmonic conjugate. याद रखना, ठीक है? और जो P होगा वो हमेशा AB के बीच में होता है. मतलब the point P divides AB internally. इसीलिए तो रेशियो को पॉजिटिव लिया जाता है. इसीलिए रेशियो को पॉजिटिव लिया जाता है L:M. But when the point Q divides AB in the ratio L:2 minus M. Why L:2 minus M? Because it divides AB externally, right? So this is the solution. So in this way you have to solve the harmonic conjugate based question. लेकिन coordinates ठीक से लेना है. इधर उधर हो गया तो x1 x2 अगर y1 y2 के जगह में आ गया तो then it will be completely wrong, right? So coordinates ठीक से लेना है. ये हो गया P का coordinate. This is A, this is B, right? So Q का coordinate find out करना है. So in this way you have to find out. फर्स्ट ऑफ ऑल रेशियो फाइंड आउट करो, उसके बाद वो रेशियो को लेके क्यू का कोऑर्डिनेट्स हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट? सो दिस इज ऑल अबाउट हार्मोनिक कॉन्जुगेट. फ्यू मोर पार्ट्स आर देयर. नेक्स्ट पार्ट आई विल डिस्कस सेंट्रोइड, सर्कमसेंटर, ऑल दिस थिंग्स. ओके.